Hello everyone. Today we're going to start a new chapter, Dar Salam to Nairobi by Ford Perfect. Let's start the chapter. Chapter 14, Dar Salam to Nairobi by Ford Perfect. Team Stream. In this story, the narrator shares the adventurous journey from Dar Salam to Nairobi during World War II. और वो अपने ज्वाइन करना जा रहा था RAF and encounters of various wildlife से मिले में जिराफ्स भी थे, एलिफेंट्स, कोबरा। अलोंग द वे जब वो जा रहा था उसने रिवर्स क्रॉस किए, लोकल लोगों से मिला, रिफ्लेक्ट्स ऑन द पीसफुल लाइव्स एनिमल्स की, कंपेयर करा टू हिज मिशन जो वो वॉर में था। स्टोरी हाईलाइट करती है नैरेटर के लव नेचर के लिए, उनका करेज एंड चैलेंजेस जो उन्होंने अपनी जर्नी में फेस कर। Characters in Spotlight. Narrator is a brave and adventurous man who joins the RAF during World War II. He loves nature and enjoys observing wildlife, but he is also cautious and thoughtful. The Shell Company is supportive and generous, allowing the narrator to join the war effort while continuing to pay his salary, showing kindness to RAF doctor is a friendly and considerate doctor who evaluates the narrator flying duties. He is lenient about the height requirement, allowing the narrator to join despite being very tall. Six men at the Wami River. These men help the narrator cross the river by pulling his car on a raft. They are strong and determined, working hard to safely complete the task. Customs official, elderly, toothless man at the Tanganyika, Kenya border who is informal and laid back, having worked at the customs post for 37. He is kind and welcoming to the narrator. The quest begins. Have you ever been to Africa? It was 1939 and World War II तभी शुरू हुआ। एक यंग रोल्ड डाल वर्किंग जो अफ्रीका में काम कर रहे थे वो शेल ऑयल कंपनी इन दार एस सलाम तंजानिया को कहा गया देन कॉल्ड तंजानिका सेट आउट इन दिस ओल्ड कार ताकि वो ज्वाइन कर सके रॉयल एयरफोर्स की डेस्टिनेशन थी वाज द सिटी ऑफ नायरोबी इन केन्या तो दिस पैसेज जो है ऑटोबायोग्राफिकल बुक में से लिया हुआ है गोइंग सोलो इज अबाउट उनकी जर्नी के बारे में है अकेले जब उन्होंने जर्नी करी एंड एनिमल्स और पीपल जो उनको रास्ते में मिले In November 1939, जब वॉर 2 months old हो चुका था, I told the Shell company that I wanted to join up. मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, help in the fight against Moana Hitler, and they released me with their blessing. In a wonderfully magnanimous gesture, उन्होंने मुझे बताया कि they would continue to मेरी salary मुझे पे करेंगे into the bank जब भी I might happen to be and for as long as the war lasted, जितने टाइम तक war चलेगा, until I remained alive. I thank them very much indeed and get into my ancient little fort, Prefect, and set off on 600-mile journey start की from Dar es Salaam to Nairobi to enlist in the RAF. When one is quite alone on a lengthy and slightly hazardous journey like this, so every sensation जो है pleasure का and fear का, it enormously intensifies. And several incidents to have from that strange 2-day safari up through Central Africa in my little black fort that have remained clear in my memory. A frequent and always wonderful sight was astonishing number tha giraffe ka that I passed on the first day. Usually in groups say of 3 or 4, often with a baby alongside, and they never ceased to enthrall me. They were surprisingly tame. I would see them ahead of me, nibbling green leaves from the tops of acacia trees by the side of the road. जब भी मैं वहां पर आता था, I would stop. मैंने अपनी कार रोकता था and बाहर निकलकर I walked slowly towards them, shouting inane but cheery greetings up into the sky. जहाँ पर small heads were waving about on their long knobs. I've often amazed myself by the way I behaved when I was certain that there were कोई भी other human beings नहीं है within 50. तो जितने भी माय इनहिबिशंस थे वो डिसअपियर हो जाते थे एंड आई वुड मैं चिल्लाने लगता था हेलो जिराफ्स हेलो 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 हाउ आर यू टू जिराफ्स क्या करते थे दे वुड इंक्लाइन देयर हेड्स अपना हेड वो स्लाइटली इंक्लाइन करते थे एंड मेरे को देखते थे विद लैगोरस डिम्योर एक्सप्रेशंस मैं जैसे पहचानता हूँ जिससे बात करना चाह रही हूँ बट दे नेवर रन अवे लेकिन वो वहां से भागते नहीं थे आई फाउंड इट एक्सिलरेटिंग टू बी एबल टू वॉक फ्रीली वहां पर मुझे डर नहीं लगता था मैं इजीली वहां पर वॉक कर सकता था ह्यूज ग्रेसफुल वाइल्ड क्रिएचर्स वहां पर थे और जब चाहे मैं उनसे बात कर सकता था द रोड नॉर्थवर्ड थ्रू टंगानिका रोड जा रही थी वो बहुत ही पतली थी एंड ऑफन डीपली रटेड एंड वंस आई सॉ वहां पर मैंने बहुत ही बड़ा थिक ग्रीनिश ब्राउन कोबरा देखा था दैट वाज ग्लाइडिंग स्लोली ओवर द रट्स इन द रोड 30 yards मेरे से आगे था
इट वॉज 7 और 8 फीट लंबा था और उसने अपनी फ्लैट स्पून शेप्ड हेड को 6 इंच अप ऊपर उठा रखा था एयर में एंड वेल क्लियर ऑफ द डस्टी रोड। तो आई स्टॉप द कार, मैंने बहुत स्मार्टली वहां पर कार रोकी ताकि भागना ना पड़े ओवर। एंड टू बी ट्रूथफुल, मैं बहुत डरा हुआ था दैट आई वेंट क्विकली कि मैं फटाफट से रिवर्स किया एंड केप्ट बैकिंग अवे अंटिल फियर समथिंग कि कुछ ऐसा है कि डिसअपीयर्ड हो जाए इनटू द अंडरग्राउंड। आई नेवर लॉस्ट माई फियर ऑफ स्नेक्स ऑल द टाइम आई वॉज इन ट्रॉपिक। जब भी मैं ट्रॉपिक साइड में होता हूँ तो मेरे को जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो सांप से लगता है, स्नेक। दे गिव मी द शिवर्स क्योंकि उनको देखकर मेरे को शिवरिंग होने लगती है। एट द वॉमी रिवर पे नेटिव्स पुट माई कार ऑन अ राफ्ट एंड 6 स्ट्रॉन्ग मैन ऑन द ऑपोजिट बैंक वो मुझे पुल करने लगे अक्रॉस द 100 yards और सो ऑफ वाटर रस्सी की एंड chanting as they pulled. The river was running swiftly, and in midstream, the mile raft upon which my car and I were balanced, they began to get carried down river by the current. अब 6 strong men chanted louder and pulled harder. I sat helpless इन द कार में बैठ गया था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्रोकोडाइल्स को स्विमिंग करते हुए देख रहा था अराउंड द रैफ्ट एंड क्रोकोडाइल्स जो थे वो मुझे देख अपने क्रूअल ब्लैक आईज। आई वॉज बॉबलिंग अबाउट ऑन दैट रिवर फॉर एन वन आवर बट एंड में 6 स्ट्रॉन्ग मैन बैटल को जीतते हैं विद द करेंट्स एंड पुल्ड मी अक्रॉस। That will be 3 shillings Bhavana, they said, laughing. Only once did I see any elephant. I saw a big tusker and his cow and their one baby to move कर रहा था slowly forward in line astern about 50 yards from the road on the edge of the forest. I stopped the car. मैं कार को रोका उनको देखने के लिए बट मैं बाहर नहीं निकला। Elephants never saw me, मुझे कभी नहीं देखा उन्होंने। And I was able to stay gazing at them for quite a while. With great sense of peace and serenity that seemed to be surround these massive, slow-moving gentle beings. उनकी skin जो थी that hung loose over their bodies like suits they had inherited जो उन्होंने larger ancestors से लिए with the trousers ridiculously baggy. Like giraffes की तरह वो भी vegetarians थे और उनके पास hunt और kill नहीं करते थे किसी और जानवर को ताकि survive कर सके जंगल में और कोई अदर wild beast would ever dare to उनको डरा नहीं सकते। ओनली द फाउल ह्यूमंस जो थे एंड ओकेजनल बिग गेम हंटर हंटर आते थे या आइवरी पोचर मारने के लिए आते थे तो उनसे वो डरते थे। बट दिस स्मॉल एलिफेंट फैमिली डिड नॉट लुक एज दे हैड मैच येट ऑफ एनी ऑफ दीज हॉरर्स। सो दे सीम टू बी लीडिंग अ लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट कंटेंटमेंट। वो बहुत सेटिस्फाइड और खुश थे। बेटर ऑफ देन me. I told myself and a good deal wise. I myself am at this moment on my way to kill Germans. मैं भी अपने रास्ते में था, वॉर के लिए जा रहा था टू किल जर्मन्स एंड टू बी किल्ड बाय देम या फिर वो मुझे मार देंगे। बट वो जो एलिफेंट्स थे उनको ऐसा मर्डर जैसा कोई थॉट नहीं था उनके माइंड में। तो एट द फ्रंटियर बिटवीन टैंगेनिका एंड केन्या देयर वाज एक वुडन गेट था क्रॉस द रोड विद एन ओल्ड शैक थी उसके अलॉन्ग विद एंड इन कमांड ऑफ दिस ग्रेट आउटपोस्ट ऑफ कस्टम्स एंड इमिग्रेशन वॉज एन एंशियंट बहुत ही पुराना और टुथलेस ब्लैक मैन जिसने मुझे बताया था कि जो वहां पर था 37 ईयर्स से उसने मुझे कप ऑफ टी दिया और मुझे बोला ही वॉज सॉरी उसके पास शुगर नहीं है उसके अंदर डालने के लिए। मैंने उससे कहा अगर विश टू सी माई पासपोर्ट देखना चाहता है वो। उसने अपना सिर हिलाया एंड सेड ऑल पासपोर्ट्स लुक द सेम, उसको सब एक जैसे लगते हैं। किसी भी इवेंट में उसने ऐड किया स्माइलिंग सीक्रेटली ही कुड नॉट, वो बिना स्पेक्टिकल्स के पढ़ नहीं सकता एंड डिड नॉट possess any और उसके पास स्पेक्टिकल्स नहीं। आउटसाइड द कस्टम्स शैक एक ग्रुप ऑफ इनॉर्मस मसाई ट्राइब्समैन थे जिन्होंने स्पीयर्स उनके हाथों में वो जिसको मारते थे पकड़ते थे चीजों को वो राउंड माई कार। उन्होंने मेरे को बहुत ही क्यूरियसली वो देख रहे थे। उन्होंने कार को पैट किया अपने हैंड से बट वी वर अनेबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज, लेकिन हम एक दूसरे की लैंग्वेज भाषा नहीं समझ। A little later on, I was bumping along a particularly narrow bit of road through some very thick jungle में से मैं वहाँ निकलता गया। All of a sudden, sun जो है bent down and 10 minutes में अंधेरा हो गया over the jungle end. My headlamps पर वो भी मेरी गाड़ी की लाइट्स भी बहुत कम चल रही डिम हो रही थी। तो इट वुड हैव बीन फुलिश कि आगे रात को मैं और ट्रैवल करूँ तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो मैंने वहीं पास किया था रोड का इन अ स्क्रबी पैच ऑफ थॉर्न प्लीज ताकि सुबह होने का इंतजार करूँ। मैं कार में बैठा विंडो डाउन करी और आई वाज जंगल की आवाजें सुनते रहा अपनी चारों तरफ एंड मैं डर नहीं रहा था। कार इज गुड प्रोटेक्शन था किसी तरह के वाइल्ड एनिमल। आई हैड विद मी एक सैंडविच था जिसपे हार्ड चीज था उसके अंदर एंड आई एट दैट। देन आई वुंड अप द टू विंडोज तो मैंने ऊपर किया लिविंग जस्ट अ हाफ इंच गैप छोड़ दिया था थोड़ा सा टॉप ऑफ ईच
backseat, and curled up and went to sleep. मैं नायरोबी पहुंचा at about 3 o'clock next afternoon. सीधा मैंने स्टॉप किया एरोड्रोम जहाँ पर स्मॉल आरएएफ हेडक्वार्टर सिचुएटेड थे. वहाँ पर मुझे मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ मेरा by an affable English doctor who remarked that 6 feet 6 inches was not the ideal height for the pilot of aeroplane. सही height नहीं. So does that mean you can't pass me for flying duties? I asked him fearfully. Funnily enough, he said there is no mention of a height limit in my instructions, so I can pass you with a clear consign. Good luck, my boy. Fun fact. So during World War II, Dudley Beckham, फेमस ब्रिटिश पायलट थे, वो पहले वुमेन बनी थी तो फ्लाई जिसने सोलो जो है फ्लाइट उड़ाई थी अक्रॉस द अटलांटिक ईस्ट से वेस्ट तक 1936. लाइक द नैरेटर ने भी फ्लू करा था डेंजरस कंडीशंस में शोइंग करेज एंड डिटर्मिनेशन. Let's do the vocabulary words. Magnanimous, generous, endless, join the armed force. Hazardous, dangerous. Intensified, greatly increased. Enthrall, hold one's attention. Inane, silly, meaningless. Inhibitions, shyness. Languorous, lazy. Demure, shy. Exhilarating, exciting. Rutted, deep, narrow marks made in the ground by a vehicle. Current, continuously flowing water. Astern, behind. Serenity, peace. Contentment, a feeling of happy satisfaction. Scrubby patch covered with short trees and bushes. Curled up to sit or lie in a position with your arms and legs close to your body. Affable, friendly. Signs a moral sense of right or wrong. Let's engage and evaluate. Let us assess. Let's do the true and false. The Shell company agreed to pay the narrator's salary for the entire duration of the war. True. The 6 men pulling the raft across the Vami River didn't ask for any payment. The narrator reflected that the elephants were more peaceful and content than he was. True. The narrator spent the night parked in a scrubby patch of thorn trees when darkness fell. Let's do the fill in the blanks. Dash were the most frequent animals the narrator encountered on the first day of the journey. Giraffe. The customs official at the Tanganyika, Kenya frontier had been working there for 37 years. The narrator's journey from Dar es Salaam to Nairobi took 600. The narrator's journey from Dar es Salaam to Nairobi 2 days. The narrator was ultimately cleared for flying duty despite his. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. Bye bye. Take care. Thank you.